Let's pray. Please accept my respectful obeisances. Hare Krishna. Namo Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, everyone. So, I wish to share my experience about what convinced me to be a homemaker. Uh, so, I just wanted to say that, first of all, in my childhood, I used to always observe and I used to always await my mother when she would come back from work. I used to be waiting for her love, waiting for her company, and waiting for her bedtime stories, waiting for her time in time whenever I wanted, and I wanted her time 24 bar 7 minus my sleeping time, and she would just come tired, and she just had energy to cook, and then she would doze off. And seeing her energy levels, I just would pray that when she could, Hare Krishna, dear Jasina Sudhir Mataji, uh, seeing her energy levels, I used to feel that I wish that my mother would not work. I wish my mother would stay back at home to give me her company. And this was my prayer, this was my desire. And I used to observe, because I used to miss my mother, I used to observe my teachers in school, because they were also mothers of other children. So as a child, I used to observe how Hare Krishna, dear Balavembu Subramanian Mataji. So I used to observe how are the teachers in my school, but they also used to look very tired. They used to bring their book, and as they enter the class with their book, they would come in full speed and in full style, and they would say, they would keep their book in full power, and they would say, "Good morning, children," and then they would start the class. And that used to make me feel, oh, they are also tired, very tired. And they used to give classes to so many children, to 10 batches a day or more, and a 45-minute session. So my teachers also were looking very tired. And then I used to observe my classmates, I mean, not classmates, but my neighboring children who used to play with me. I used to observe their mothers. They also used to look very tired if they were going for work. Those who are not going for work, they were the ones who are looking much more peaceful, much more calm, and a little more happy and jolly and caring. And they had time to talk to their neighbors, and they would talk to us also lovingly and with great interest and admiration. So I used to desire that my mother also be with me. And Krishna heard my prayers, and within 6 years, my mother gave up her job. And thereby, I was a very happy child, and I became ecstatic in her company. And my ecstasy had no end. And this was my childhood experience. And uh, apart from that, so that was one observation. And apart from that, as I observed in my life and in all my neighborhood people's lives, I felt that if the father or the male member is earning and working, and then when one person is earning a salary, it's going to be enough. Two people don't have to work, and then there is nobody for the child at home. This is what I used to feel. And so for our daily
daily food or clothing or for the electricity bills or for the education, for anything, what a father earns is enough for the family. This is what I used to feel. And even now I feel the same. And the children need someone at home. So this is what I used to feel, and later on in social science textbooks, it was told that both the women and the men have to work. Why only the girls are told to wash vessels, and why only the daughters are told to marry early? These kind of topics were picked in our social science textbooks, and we had a very nice social science teacher, Annette ma'am, my teacher. She was very nice teacher, and she explained everything in social science very nicely. And so I used to get good marks. So social science was my favorite subject, and the way everything was presented in the textbook was also very convincing that daughters also should work, daughters also should get educated, and they should earn, they should stand on their own feet. Why only daughters are told to wash vessels? All these things appeared very convincing. Uh, but when I spoke to my mother was my mother. So she told me that, you see, a girl, every girl will want to marry. So if she wants to marry, then she should know to cook, she should know to wash vessels, she should know to be humble, she should not be too egoistic. And when a woman earns, then she naturally feels independent, she naturally feels that she has money in her hand. And then naturally, when there is some misunderstanding, then she may tell that, I have money, I don't need your money, I can stand on my own feet, I don't need your money, I will live my life. These kind of things. I have my money, I will do everything. These kind of things may come out of your mouth. This is what my mother told me. And my mother told that ultimately, whatever is told in the Vedas, is told in the scriptures, is the most brilliant and it's the most perfect because it is given by God. So then, what about modern thinking? That was my question. So my mother said, modern thinking is perfect for the modern lifestyle, but if you consider every single factor, every single reason, then Vedic lifestyle only will get rank one, and modern lifestyle will have to bow down. Will the modern lifestyle will become embarrassed in front of Vedic lifestyle, because in Vedic lifestyle, it is it there are so many factors like human psychology, male psychology, female psychology, the physical strength of a man and a woman, the physical weaknesses and the abilities of a man and of a woman bodied soul. So everything was considered, and thereby Vedas have been made. So, therefore, she told me that for every reason, Vedas are superior and Vedic principles are superior. She told me, and then she told me that uh, a woman a woman is standing on her own feet, and a woman is independent even without earning, even without going for a job. How? I asked her how. So she told me, it is simple. See, when a woman goes for work, then she'll naturally feel that she has money in her hand, she's independent, she can do everything by herself, and that naturally brings some level of ego. See, the women of my grandmother's age, those who are working, their culture and their value system was different. And in today's generation, in my generation, the value system is different. Now, because of our social science textbooks, everybody is thinking that women need respect, men need respect, equality, and all these things. But in Vedic system, women were respected like Lakshmi Devi, and the men were respected like Vishnu.
in a household. So both were given respect, both were given love, but it was given in the Vedic way. And um, so my mother had told me that when we follow a Vedic lifestyle, and when we compare that, if we go for work, and if at all pride creeps in, and ego creeps in, and a feeling that I have everything, I'm earning. If this attitude creeps inside the heart of a woman, she will blurt it out when she's tired or when she's unhappy for some reason. She will say, I don't need your money, to her husband. And the husband will feel hurt. And that will not keep the relationship sweet. And finally, if a girl wants to marry, and generally most girls want to marry and want to experience the happiness in a married life, and they want to have children, they want to cook, they want to be happy. uh, every girl wants to marry generally, or she wants to experience what is a married life. It's a common desire amongst most of the girls. Very rarely girls say that we don't want to marry, we want to live in the way we want. So my mother told that if you want to marry and if you want a happy marriage, then you should know that a man wants respect, and a man wants to provide and protect his wife and his children, and a man wants to feel that he's giving enough for his family. If a woman says, thank you, you're giving me so much, I'm so happy in your company, to her husband, if a woman says, and if she says that, will you buy me this, will you buy me that, if she's having this kind of a relationship, her husband will be very happy. Rather, if a woman says, I'm earning, my job is important, if you're not there, I don't care. For me, my job is important. I'm getting money. I'm standing on my own feet. I'll buy my things. I don't need your money. If she tells like this, a man may accept it, but he will also feel hurt if it is told in a more arrogant way, and if it is told in a way that I don't need you, I just need money. So this will hurt a man. So this is what my mother had told me. And my mother had told me that when money comes in the hand, we become independent, and that independence with ego will not be, we just become financially independent, but we don't become independent at the level of our soul. At any other level, we don't become independent. And then she told me, what is independence? She told me that independence is that, it's not that if we are very meek and humble with our husband, we are not independent, we are dependent, we are seeking shelter. No, she told me that if we say that, okay, my husband, Krishna tells, for Krishna's sake, that Krishna tells that we should respect our husband like God. So, for Krishna's sake, I will see my husband as God, and I will respect him. I will be submissive to him. And if he gives me money, I will accept it. And before the marriage only, we can choose a husband who is at our financial level or at a better financial level. Or if we are a boy, then we should choose a girl from an equal or a lower financial status. Then what happens is, the advantage from some case studies which I have seen in my friends' lives and all that. What happens is, if a financially rich girl marries a poorer boy, then that girl is used to buying lychees and exotic fruits, rambutans, blueberries. She's used to buying such things. But the boy, being financially poor, he's used to just buying the required sabji and roti, rice, and whatever. And when she has the desire that I want this fruit, I want that fruit, he'll feel, you're a spendthrift. Why do you need those fruits? Just local fruits are enough. And if the girl feels that I want to keep my house empty and clean, and I don't need these old vessels, this old tawa which is not working, I cannot lift the dosa from this, I'll just sell it away, or I'll just discard it. When a girl feels like that, the boy will not want to
sell those old utensils. He will want to keep it because his parents had that culture of keeping all the old items because it may be of use sometime in the future. So this kind of mentality difference will be there when there is a status difference economically. And if a girl comes from a poorer background, when she enters a household of her husband of a richer background, she'll feel, wow, everything is here. Whatever I never dreamt of is here. Wow. Or even if the boy is of a financially equal level, then the girl will feel, wow, all the facilities are there, which were there in my house. Thank God, I'm comfortable here. So this kind of a feeling. And then she'll be very happy. So that's why in Vedic lifestyle, a girl who is marrying to the boy's house was chosen in such a way the boy will be economically richer than the girl in this way. So then the girl doesn't even have to work. She doesn't have to take the anxiety, financial anxiety. And a woman is naturally having the nature to care and to cook. Even if you see so many YouTube shorts or videos, you will see little children saying, "My mother cooks, and my father goes for work. Or my mother decides the menu, whether it's a Westerner or whether it's an Indian." All are saying the same thing. Every child says, "My mother decides the menu." So you see, naturally, a woman's instinct is to care, is to love, is to cook, is to clean, is to take care of her children, nurture the family. Um, and it's a very sacred responsibility. And the nature of a man, any part of the world, if you see any video, when the child falls, the man goes, runs and picks up his child. A woman will be a little slower. So naturally, a man is into protecting his kids, protecting his wife, protecting his family, and into going out and earning. This is the nature of a man. So Vedic lifestyle, the judgments in Vedic lifestyle, the decisions made by Vedic lifestyle are truly sacred, and truly wonderful, truly perfect for all times. And then personally, so I felt, and my mother had told me that it's not independence if you just stand on your feet with your money in your hand, because if that brings arrogance, then that is not independence. Rather, if you are humble, if you're respectful, if you're grateful to your husband, and if you thank him for whatever he's giving you, and if before marriage only you tell that, I will not be earning, I'll not be working, so you please earn and you do that, and I will take care of the house, I will cook, I will clean, and I will take care of the children, and I will want to study scriptures, chant, become more spiritual, more Krishna conscious. And when you come tired from work, I will want to do my services at my best, and that way I will not be tired and drained out. And so if you wish, you can give me some money for the household expenditures. Otherwise you can buy it for me. It is your choice. In this way, if a woman before marriage tells her husband to be and makes that mutual agreement, then a woman doesn't have to work. And if she is very humble and respectful, just as children, whether we were a boy or a girl, we were very respectful with our parents. Why? Because our father and mother were the ones who would cook for us, and a father would earn for us, mother would cook for us, and we were dependent on them. So we would never say, "Mother or father, I'm going to stay in a separate house, and I will work for a tea shop and I'll earn my money. So I don't need your roti or dal or sabji. I don't need your money. I don't need to be educated. I will earn my money. I will pay for my school bills and I will take care of myself. I'll take care of my life. I'm going to live with my friends separately." In this way, no child has told when the child is very small and young, we were worshipping our parents. We were all in our heart that we would think that, oh, my parents are giving me everything, they are so nice. And we would treat our parents with so much respect that there's no culture of divorce with parents.
So in the same way, if a wife treats her husband, and husband's family means the in-laws, the sister-in-law, everybody in the family, if the girl treats them with respect and love, just as her parents took care of her, and that time she was not disrespectful, she was not saying that I will stand on my own feet, I don't need your money, she never told like that. So a husband also is like the father and mother, because after the girl grows big and her parents grow old, if a girl is married, then a husband plays the role of her parents. So she just has to be respectful, grateful, loving with her husband, and very grateful to her husband's parents, husband's sister, husband's family members. In this way, if she's grateful, then that household will be so blissful. It will be same like how when she was in her parents' home. And even if it is not that sweet, but for her, it will be very sweet because her heart is clean and her heart is pure. And this way, she will be independent. Why? Because she is not bound by the feeling that I want respect. Everybody should give me respect. My husband should give me respect. Everybody should listen to me. These are all desires. Okay, my session ended in Facebook, but these are all. I'll just start another live session there to complete the part two. So three, two, one, go. Yes, Hare Krishna. So I'm continuing the session in short. In 2 3 minutes, I want to end up. So a girl or a woman is independent if she is thinking that she wants to follow Krishna's orders, Vedic orders, and she just wants to do everything for Krishna and Krishna given husband. Therefore, she wants to be respectful and thank the husband. She will not go for work, but she will thank the husband that thank you for taking this pain of going for work and listening to your boss and to everybody who may not gel with you or who may gel with you, but you're going out, you're working for me, and you're providing me everything. Thank you so much. And because of that, I'm staying at home. So I'm not too tired. I can take care of the house. I can do what I want. And so when we have all these benefits, then a woman can easily be calm-headed and respectful and grateful, just as she was with her parents. Our parents were taking care of us. Our parents purchased everything for us when we were kids. That time we didn't say we want to be independent, we want to stand on our feet. So after marriage, why should we do that? After marriage also, we can have the same attitude. See our husband like our parents. We saw our parents like God. Let's see our husband like God. And always let's respect the husband. Thereby, we will be independent because we won't be bound by the desire that I want respect, I want equality. We ourselves will give respect. Whether our husband respects us or not, we will be grateful to our husband. We will not expect respect. So we will not be bound by that desire that I want respect, I want equality. No, we will give respect, we will be grateful. In this way, we can be so ecstatic, so happy. So, I will share more points in the part two of this session some other day, but I will wish to translate this in Hindi. हिंदी में जब मैं छोटी थी मैं देखती थी कि मेरी माँ जॉब को जाती थी बहुत तक जाती थी और मुझे बेड टाइम स्टोरी भी नहीं बोल पाती थी मुझे मेरे साथ खेलना भी नहीं होता था मेरी माँ और मेरे साथ मेरी माँ बहुत थक जाती थी, बहुत प्यार करती थी पर बहुत थक जाती थी, इसीलिए वो सिर्फ़ खाना पकाती थी, जॉब को जाती थी, वापस लौटती थी, फिर खाना पकाती थी, थोड़ा जपा करती थी, फिर सोती थी। मेरे साथ बातचीत नहीं होता था और मैं बहुत दुखी थी कि मेरी माँ मेरे साथ टाइम नहीं देती है, ऐसे मुझे बहुत दुःख होता था और मैं दुखी होकर फ्रिज खोलती थी और देखती थी फ्रिज में क्या है। फ्रिज में कुछ दवाई होता था तो मैं वो पी लेती थी, किसी से भी बिना पूछ के। और एक दिन मैं ऐसे पीकर दवाई को वो दवाई फ्रूट फ्लेवर में था, तो मैंने सोचा वो जूस है।
उसको पीकर मैं सो गई। ऐसे सब होता था गलत चीज़ें, क्योंकि मेरी माँ थक जाती थी ना जॉब को जाकर। और मुझे बहुत दुःख था कि मेरी माँ जॉब को जाती है, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती है, ऐसे। और फिर मैं जब छोटी थी, मैं हर कोई माँ को देखती थी। मेरे स्कूल में मैं देखती थी, मेरे टीचर्स जो हैं, उनके भी बच्चे होंगे, उनको भी सुस्त और टायर्डनेस होगा। तो मैं देखती थी, क्या वो टायर्ड है? हाँ, वो टायर्ड थे। वो एक पुस्तक लेके आते थे और डोर ओपन करते थे और फिर बुक रखते थे, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऐसे बोलकर फिर फिर बोर्ड में कुछ लिखते थे। अ, ऐसे उनका सेशन शुरू होता था। तभी भी मुझे पता चलता था, ओ ये भी बहुत टायर्ड है, तो इनके बच्चों को भी बहुत दुख होगा कि मेरी माँ मेरे साथ खेलने के लिए नहीं है। और जब मेरी माँ हॉलीडेज़ में थी, वेकेशन में थी, तब उस टाइम में जस्ट वेकेशन से पहले हमारे टीचर्स बोलते थे, थैंक गॉड यार, आज हम बहुत मस्ती करेंगे, थोड़ा रेस्ट भी करेंगे, फिर हम मस्ती करेंगे, एन्जॉय करेंगे, हम वेकेशन टूर जाएँगे, हम रिलैक्स करेंगे, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर वेकेशंस, वेकेशंस आए हैं, ये ऐसे वो बात करते थे उनके कलीग्स के साथ। और मैं सुनती थी और मुझे समझ में आता था, ओह! मेरे टीचर्स जो माँ, वो भी माँ हैं और उनको भी वेकेशन चाहिए, यानी उनको जॉब उतना पसंद नहीं है। ऐसे मुझे अंडरस्टैंडिंग आता था। और फिर मैं मेरे नेबर्स के मम्मास, मेरे नेबर्स के मदर्स को देखती थी, और जो भी जॉब को जाते थे वो भी थक जाते थे और वो भी ऐसे थे, और वो कुकिंग करते थे, फिर वो सोते थे ज़्यादा। और ऐसे मुझे पता चला कि हर कोई माँ जो काम जॉब करते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा ही टायर्ड बनते हैं। बहुत रेयरली कोई माँ ज़्यादा एंथुसियास्टिक थी, जॉली थी, फिर भी 1 महीने में थोड़ा दिन वो भी टायर्ड बनते थे। तब मुझे पता आज तो ये आंटी टायर्ड है, ऐसे मुझे लगता था। अम, तो तो मैंने जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई, हमारा सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में लिखा था कि सिर्फ बेटियों को क्यों इतना जल्दी शादी करवाते हैं, सिर्फ बेटियों को क्यों बर्तन धोने के लिए सिखाते हैं, झाड़ू पोंछने के लिए बोलते हैं, लड़कों को भी बोलना चाहिए ना। ऐसे सब साइंस सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में था। और हमारा सोशल साइंस टीचर बहुत अच्छी थी और वो बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन करती थी, उसकी वजह से मुझे सोशल साइंस में बहुत अच्छा मार्क आता था। और वो सोशल साइंस टेक्स्ट बुक इतना अच्छा से कन्विंसिंग था कि मुझे भी लगने लगा, शुरू होने लगा सोच कि हाँ, क्यों इतना जल्दी शादी? हाँ, क्यों इतना लड़कियों को ही बोलते हैं कि बर्तन धो, एजुकेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों ऐसे? और लड़कियाँ रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्यों ये सब लड़कियों को ही? और मैंने मेरी माँ से पूछा ये सब प्रश्न, तब मेरी माँ ने बोला, देखो बेटा, ये सब मॉडर्न थिंकिंग है, शास्त्रों का थिंकिंग, वेदों का थिंकिंग, ये भगवान कृष्ण से आता है। और ये तो हर काल, हर युगा के लिए परफेक्ट है। पर ये मॉडर्न थिंकिंग में बहुत सारे गलतियाँ हैं और इसके वजह से बहुत सारे अ, बहुत सारे फैमिलीज़ में बहुत सारा दुःख भी है। ऐसे मेरी माँ ने बोला मुझे, और मेरी माँ ने बोला, देखो बेटा, अगर हर एक लड़की को शादी करने का इच्छा होता है और एक लड़की शादी करने का इच्छा होता है, तो उसको प्रिपेयर्ड होना चाहिए ना। शादी में सिर्फ एन्जॉयमेंट नहीं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होते हैं। एक घर में खाना होना चाहिए, अच्छा खाना, हेल्थी खाना। और एक घर में एक माँ या एक बाप कोई होना चाहिए जो बच्चों को प्रेम से टाइम दे सकता है, उनके क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है। और एक टायर्ड पति जो आता है,
उनको प्रेम से बात करके, उनको एप्रिशिएट करके, उनको उनके साथ कृतज्ञता से फ्रेंडली वे में डील करने वाली एक अ, गृहिणी होनी चाहिए, ऐसे मेरी माँ ने बोला। और मेरे माँ ने बोला, जब एक लड़की जॉब को जाती है ना, वो अम, खुशी उसको खुशी लगता है कि मैं अभी मेरे पैर में खड़ी हूँ, मेरे हाथ में पैसा है, मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ। मैं मेरे पति के सैलरी में ही डिपेंड नहीं करूँगी, मैं मेरा सैलरी से ही कुछ भी परचेज़ करूँगी। और अगर पति बोलेगा तुम ये मत लाओ, वो मत लाओ, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, वो बोलने लगेगी। अगर उसको थोड़ा टायर्डनेस हो या गुस्सा हो या फ्रस्ट्रेशन हो या कुछ भी हो, जॉब की वजह से थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टायर्डनेस ही होता है, तब वो बोलेगी, "अरे! मेरे पास भी सैलरी है, मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं परचेज़ करूँगी, आप कौन है बोलने को?" ऐसे वो बोलेगी। तो वो हर्ट होगा पति को। तो ऐसे मेरी माँ ने बोला मुझे। और मेरी माँ ने बोला कि अ, अगर ऐसे बोलोगी ना तो शादी में वो अच्छा नहीं रहेगा। जो पति है उनको रिस्पेक्ट चाहिए, उनको प्रेम और रिस्पेक्ट, ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए, प्रेम भी नहीं, सिर्फ़ रिस्पेक्ट चाहिए और ग्रैटिट्यूड चाहिए। जो भी ये पुरुष लोग हैं, जो पिता के रूप में होते हैं या बेटा के रूप में होते हैं या पति के रूप में होते हैं या भाई के रूप में होते हैं, उन सब लोगों को एक फीलिंग होता है कि मैं मेरा फैमिली को सब कुछ देना चाहता हूँ। मेरे वाइफ़, मेरे सिस्टर, मेरे मदर, मेरे बेटी, मेरा बेटा सब मेरे वजह से खुशी में रहना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेरे वजह से मैं इनको कुछ नहीं दे पाया, मेरे वजह से उनको कुछ नहीं मिला, ये फीलिंग नहीं आना चाहिए। ये पुरुष लोगों का दिल इतना पवित्र होता है, इनका सोच भी इतना क्लीन होता है, उनके फैमिली के सोच में जब वो सोचते हैं, ऐसे उनका सोच होता है। और उनको प्रोवाइडर यानी उनको देने का इच्छा होता है। इसीलिए अगर एक फीमेल, अगर एक महिला जो उनके घर में है, गृहिणी है या बेटी है या जो भी है, लेडी है, वो अगर बोलेगी मेरे आपके पैसा नहीं चाहिए, मैं मेरा पैसों से मैं जी लूँगी, आप सिर्फ़ ये खाना लो, ऐसे वो बात करेगी ना, कोई भी पुरुष को अच्छा नहीं लगेगा। और अगर वो बोलेगी मैं मेरे ज़िम्मेदार ले लूँगी, आप क्यों? मैं बड़ी हूँ, मैं सब कर लूँगी, आप कौन हो मुझे बोलने को? ऐसे सब बोलेगी ना, किसी भी पुरुष को अच्छा नहीं लगे तो क्यों शादी करते हैं वो? अगर हम ऐसे बात करेंगे तो वो जाके वन में भी बैठ सकते हैं, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। तो मेरी माँ ने ऐसे बोला कि जो शादी सब लड़कियों को शादी करने का इच्छा होता है, जो शादी करने का इच्छा है, वो बहुत विनम्रता से रहना है। और ऐसे रहने से और ग्रैटिट्यूड से, ऐसे रहने से पति जो है वो बहुत उनको खुशी लगेगा और वो प्रेम से डीलिंग करेंगे। और तो मेरी माँ ने बोला कि अम, अगर एक वाइफ़ जो है, वो जॉब नहीं करेगी, वो घर में रहेगी, वो शांति से रहेगी, जॉब में जो भी टॉक्सिक लोग होते हैं, जो भी नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, वो सब सुनने का टेंशन भी नहीं है, वो सब पति ले लेते हैं। और एक एक लेडी को हर महीने 4 दिन थोड़ा ज़्यादा शरीर में टायर्डनेस होता है। वो उस टाइम में भी जॉब को नहीं जाना है। और वो टाइम भी छोड़िए, दूसरा टाइम अगर उसको हेडेक है या बीमारी है, जो भी है, उस टाइम में जॉब को जाने का टेंशन नहीं होता है। घर में बैठ के थोड़ा ज़्यादा रेस्ट ले सकते हैं, थोड़ा सिंपल कुकिंग कर सकते हैं, फिर भी ऐसे रेस्ट लेने से वो थोड़ा आराम में रह सकते हैं। और एक स्त्री जो है वो अच्छा कुकिंग कर सकते हैं फैमिली के लिए, हेल्दी कुकिंग, अम, और वो बच्चों के ऊपर ध्यान
दे सकते हैं, लेकिन फ़ोकस बच्चों के ऊपर, उनके पढ़ाई के ऊपर, उनके कल्चर के ऊपर, उनके वैल्यू सिस्टम्स के ऊपर, उनके फ्रेंड सर्कल के ऊपर, उनके माइंड के ऊपर, सब कुछ एक गृहिणी अम, आँख रख सकती है। और उनके हस्बैंड जब घर को लौटते हैं, वो बहुत प्रेम से, बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत ग्रैटिट्यूड, बहुत कृतज्ञता से बात कर सकती है हस्बैंड से, और उनका बॉन्ड बहुत स्वीट रहेगा, और घर को साफ सुथरा रख सकती है, क्योंकि वो थक नहीं है। मेड भी नहीं चाहिए, एक दासी भी नहीं चाहिए घर में। वो गृहिणी ही मॉपिंग सब हाथ से करके बहुत तंदुरुस्त, बहुत पता नहीं वो सही वर्ड है या नहीं, बहुत स्ट्रांग बन सकती है गृहिणी। उम, अ, ऐसे मेरी माँ ने बोला, और मैंने सोशल साइंस में पढ़ा था कि इक्वालिटी चाहिए, विमेन और मेन को इक्वालिटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तो ये सब ठीक है क्या माँ? मैंने पूछा था। तो माँ ने बोला, देखो वेदास हर टाइम में ठीक होता है। ये रिस्पेक्ट ना हमारा वेदास में, हमारा शास्त्रों में भी है कि एक गृहिणी को लक्ष्मी के जैसे रिस्पेक्ट आदर करते हैं, और एक पुरुष को विष्णु के जैसे आदर करते हैं। ऐसे मेरी माँ ने बोला। पर आज के ज़माने में सब लोग बोलते हैं इक्वालिटी इक्वालिटी, और लड़कियां बोलते हैं मुझे भी रेस्पेक्ट दे दो आप। मैं क्यों आप बोलूं, मैं तुम बोलूंगी। और ऐसे होता है, और ऐसे वो इक्वल एज वाले भी शादी करते हैं। कभी कभी दीदी वाली एज का छोटा ब्रदर वाला एज का, ऐसे शादी भी होता है। तो ये सब क्यों? ये सब शास्त्रों में नहीं लिखा है। शास्त्रों में लिखा है कि एक छोटी लड़की एक थोड़ा बड़ा लड़का से शादी करे। क्यों? ये भी मेरी माँ ने एक्सप्लेन किया, क्योंकि जो ऐसे करने से रेस्पेक्ट, एक लड़की में रेस्पेक्ट ज़्यादा होता है, वो मुझसे बड़े हैं। हाँ, और जो बड़े होते हैं ना पुरुष लोग, उनका मैच्योरिटी भी ज़्यादा होता है, और वो ज़्यादा प्रेम से डील करते हैं। या अगर हम इक्वल एज वाले से शादी करते हैं, तो उनका मैच्योरिटी थोड़ा कम ही होता है लड़की से। और अगर हम हमसे भी छोटे को शादी करेंगे ना, तो वो बोलेंगे तुम मुझसे बड़ी हो ना, तो मेरी माँ के जैसे हो, ऐसे भी बोलने शुरू करेंगे। तो ऐसे शादी नहीं होना चाहिए। ऐसे इसीलिए शास्त्रों में ये सब साइकोलॉजी अलग होती है, इसीलिए शास्त्रों में ये पहले ही डिसाइड हुआ था, भगवान ने ही डिसाइड किया, ऐसे मेरी माँ ने बोला। और मेरी माँ ने बोला कि अम, शास्त्रों में जो भी लिखा है ना, वो ऑल टाइम के लिए, हर समय के लिए, हर काल के लिए ठीक है। और मेरी माँ ने बोला, अगर अगर एक लड़की एक पुरुष से शादी करती है, हर लड़की को शादी करने का इच्छा होता है, और शादी करने के बाद अगर वो जॉब करती है, उसके हाथ में पैसा आता है, तो अब वो थोड़ा घमंड एटीट्यूड भी आता है। और वो अगर गुस्सा में है या टायर्ड है, और पति बोलेगा ना, कुछ किसी विचार में ना बोलेगा, तब वो बोलेगी नहीं मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, सब मैं कर सकती हूँ, ऐसे बोलेगी ना, तब वो हर्ट होगा पति लोगों को, क्योंकि उनका इंटेंशन कुछ अच्छा ही होता है। और लड़की लोगों इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का दिखावा करते हैं, तब झगड़ा होता है। ये सब अच्छा नहीं रहेगा बेटा, तुम्हारा शादी अच्छा होना है, तो ये सब एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ता में नहीं आना चाहिए। ये बॉन्ड इतना सुंदर बनना है, मैं बताती हूँ, ऐसे मेरी माँ ने बोला। और मेरी माँ ने बोला, अगर देखो जैसे ही पेरेंट्स होते हैं और एक बच्चा या बच्ची होते हैं, वो पेरेंट्स को इतना आदर करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम छोटे हैं, हम दूसरा दुकान में जाके पैसा नहीं कमाते हैं। हम सोचते हैं मेरी माँ जो भी बनाएगी वो मैं प्रेम से खाऊँगी। मेरे पिताजी जितना भी पैसा लाते हैं वो ही काफ़ी है बाबा। मेरे पिताजी हैं तो वो काफ़ी है। मेरे पिताजी जो भी लाते हैं वो काफ़ी है। मुझे 10 कपड़ा नहीं चाहिए। मेरे पिताजी और माताजी
है तो वो काफ़ी है। ऐसे हर कोई बच्चा सोचता है और हर कोई बच्चा सोचता है मेरे माँ-बाप हैं तो सब है। मेरे माँ-बाप जो भी देते हैं वो काफ़ी है। एक बच्चा नहीं बोलता है माँ-बाप से मैं आपसे डिवोर्स करूँगी। एक बच्चा उनके माँ-बाप से नहीं बोलता है। एक बच्चा उनके माँ-बाप से नहीं बोलता है माँ मैं टी शॉप में काम करूँगी, मैं टी शॉप में काम करूँगा, आज से मैं इस घर में नहीं रहूँगी। मैं इंडिपेंडेंट बनूँगा, मैं मेरे पैर में रहूँगा, मैं मुझे मेरे स्कूल फीस भरने के लिए आपका पैसा नहीं चाहिए, मैं अभी इंडिपेंडेंट हूँ। क्या एक बच्चा बोलता है? नहीं। इसीलिए एक माँ-बाप और बच्चा का रिश्ता बहुत मधुर रहता है और इतना प्रेम होता है कि वो प्रेम इतना डेवलप होता है, फिर जब वो बच्चा जॉब करता है भी, वो इतना घमंड से नहीं बोलता है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आप कौन हैं? ऐसे ऐसे नहीं आता है। अगर ऐसे बोलेंगे तो भी सॉरी पापा ऐसे बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उतना साल का वो रिलेशनशिप है ऑफ रिस्पेक्ट, कृतज्ञता का, गौरव का रिश्ता होता है ना, इसीलिए। तो इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि एक लड़की जो शादी होके जाती है, वो पति जो है, वो नेचुरली एक माँ-बाप का स्थान लेता है और पति ही नहीं, पति का माँ-बाप, पति का बहन, पति का भाई, पति का जो भी रिश्तेदार है, वो सब आदरणीय होते हैं एक लड़की को क्योंकि वो ही लड़की का देखभाल करते हैं। मेनली पति और पति के पेरेंट्स लड़की का देखभाल करते हैं ना, तो वो लड़की रिस्पेक्ट देना चाहिए जैसे वो उनके पेरेंट्स के घर में देती थी। जब वो छोटी थी लड़की, तब वो पेरेंट्स को आदर करती थी। वैसे ही जब शादी करती है, वो पति जो है, वो माँ-बाप का स्थान लेता है और अगर एक लड़की जॉब को नहीं जाती है और एक लड़की घर का सँभालती है, अच्छा खाना पकाती है, फ्रेश खाना पकाती है और कि बाहर से कुछ भी नहीं लाती है, बाहर से कोई मेड भी घर के अंदर नहीं लाती है, कोई झाड़ू पोंछने वाला नहीं होते हैं घर में, सब कुछ एक गृहिणी ही करती है और एक गृहिणी बहुत आदर से, बहुत कृतज्ञता से आप काम करके आप सब कुछ ला रहे हैं, जो भी आप लाते हैं, बहुत धन्यवाद, ऐसे भाव से वो बात करेगी और जो भी वो लाते हैं इसके लिए थैंक यू बोलेगी तो उनका दिल इतना खुशी में भरेगा कि वो बोलने लगेंगे तुम्हें क्या चाहिए मैं सब कुछ लाऊंगा क्योंकि पुरुष लोगों का दिल इतना शुद्ध होता है कि उनका डिज़ायर क्या होता है पता है उनका साइकोलॉजी क्या पता है वो है कि मेरे फैमिली को जो भी चाहिए मेरे वाइफ मेरे बच्चों को मेरे माँ बाप को क्या भी चाहिए मैं लेके आऊँगा उन ऐसे तो इस साइकोलॉजी होती है इसीलिए एक वाइफ जो है उसका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि थैंक यू ऐसा भाव होना चाहिए उनके पेरेंट्स के साथ कितना रेस्पेक्ट था ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए ऐसा होने से एक रिश्ता बहुत मधुर बनता है बहुत सुंदर बनता है और मेरे एक और प्रश्न था कि इंडिपेंडेंस हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने से अच्छा होता है ना माँ तब मेरी माँ ने बोला नहीं अगर हम शास्त्रों को फॉलो करेंगे और हम बोलेंगे कृष्णा ने ये पति को दिया है कृष्णा ने बोला है कि एक वाइफ पति को आदर देना चाहिए रेस्पेक्ट देना चाहिए कृतज्ञता भाव से रहना चाहिए अगर पति डांटेंगे भी वो वो बैक आंसर नहीं देना चाहिए वो गाली नहीं देना चाहिए ये सब हम कृष्णा के लिए फॉलो करेंगे कृष्णा का दिया हुआ पति को आदर देने के लिए फॉलो करेंगे तो क्या होगा हमारे अंदर सहनशील गुण बढ़ेगा और हमारा डीलिंग से हमारा बर्तन से हमारा पति बहुत खुश बनेंगे और हमें ऑटोमेटिकली प्रेम से वो बहुत प्रेम से हमसे बात करेंगे और इससे हमारा रिश्ता बहुत मधुर बनेगी और डिवोर्स का शब्द ही नहीं आएगा और अगर हम सदा रेस्पेक्ट देंगे पति को तो हमारा ज़िंदगी इतना सुंदर बनेगा कि अ, वो पति पति इतना सैटिस्फाइड रहेंगे और पत्नी भी इतना सैटिस्फाइड रहेगी फिर
उनको जो भी वो वाइफ़ को ऐसे लगेगा कि मुझे क्यों रिस्पेक्ट चाहिए? अरे मुझे रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, मैं रिस्पेक्ट दूँगी। ऐसा एटीट्यूड में शादी को एंटर होना है। ये अ, वाइफ़ अगर रिस्पेक्ट देगी, प्यार देगी, मेनली रिस्पेक्ट, पति को रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट से डील करेगी, कृतज्ञता से डील करेगी, तो वो पति जो है इतना सैटिस्फाइड रहेंगे, और पत्नी रिस्पेक्ट को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, प्रेम को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और अ, वैसे ही किसी भी पत्नी को रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, सिर्फ़ प्यार चाहिए, और सिर्फ़ तुम बहुत अच्छी हो, ऐसा एप्रिसिएशन चाहिए, कोई भी पत्नी, बेटी हो या जो भी हो। और अगर एक पत्नी शादी में जाएगी, एंट्री शादी से पहले ही एटीट्यूड रहना चाहिए कि मुझे प्रेम भी नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट भी नहीं चाहिए, सिर्फ़ मैं रिस्पेक्ट दूँगी और कृतज्ञता दूँगी। ये मेरा ड्यूटी है, मैं मेरा ड्यूटी करूँगी। दूसरे लोग, मेरे पति हो या इन-लॉज़ हो या जो भी हो, वो जैसे भी हो, मेरा साइड से मेरा ड्यूटी मैं करूँगी, क्योंकि ये कृष्णा का दिया हुआ है। वो मुझसे शादी कर रहे हैं ना, यानी मुझे एक्सेप्ट किए हैं ना, यही बड़ी बड़ी बात है। ऐसे वो बहुत एप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट से शादी को एंटर करेगी ना, तो क्या होता है, हम डिमांड नहीं करते हमें एप्रिसिएशन, हमें तारीफ़ चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, ऐसे एटीट्यूड से नहीं जाना है शादी में। हम सिर्फ़ देने का एटीट्यूड में जाना है। ऐसे जाने से क्या होगा, जो पति है, जो इन-लॉज़ है, जो जो भी है, वो सब, उनको सब लगेगा कि वाह! ये कैसी बेटी है हमारे घर में, कैसी बहू है, कैसी पत्नी है, वाह! और वो इतना प्रेम से बात करेंगे, क्योंकि उनके परमात्मा खुश बनेंगे, कृष्णा खुश बनते हैं ना, तो ऑटोमैटिकली हमारे पति खुश बनते हैं। क्योंकि हम सब कृष्णा का अंश हैं, तो अगर हम कृष्णा का खुशी के लिए कुछ भी करेंगे ना, तो कृष्णा का हर कोई अंश को खुशी होता है। और कृष्णा क्या आके बोल सकता है, "अरे वाह! तुम कैसी हो? तुम बहुत अच्छी हो।" क्या कृष्णा बोल सकता है? नहीं, क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं हैं। पर कृष्णा वो प्रेम को कैसे कन्वे करता है? हमारा पति के द्वारा, हमारा इन-लॉज़ के द्वारा, ऐसे। तो इतना ही है, ये बहुत लंबी सेशन हुई। अम तो इस सेशन में हमने कवर किया सिर्फ़ 2 पॉइंट कि अ, क्यों मैं जब छोटी थी, मुझे सब आंटी लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं, ये इसके वजह से मुझे जॉब जॉब यानी बहुत स्ट्रेस, नहीं चाहिए बाबा। ये अंडरस्टैंडिंग कैसे आया? और दूसरा पॉइंट था कि अम, श सोशल साइंस में क्या-क्या लिखा था कि हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्यों लड़कियों को इतना काम और रिस्पेक्ट देने का सिखाया जाता है, और इसके लिए उत्तर कि हम इंडिपेंडेंट कैसे बन सकते हैं, हमारा असली इंडिपेंडेंस क्या होता है कि अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, ये असली इंडिपेंडेंस होती है। और ये मॉडर्न इंडिपेंडेंस वो इंडिपेंडेंस नहीं होती है, वो डिपेंडेंस होती है। डिपेंडेंस की हमें रिस्पेक्ट चाहिए, नहीं, वो नहीं चाहिए हमें। तो ये, और दूसरा पॉइंट था कि ये मॉडर्न लाइफ़स्टाइल में इक्वालिटी होती है ना, तो इसका क्या आंसर? नहीं, वेदिक शास्त्रों में लिखा है कि रिस्पेक्ट एक स्त्री को लक्ष्मी के जैसे, पुरुष को विष्णु के जैसे, और जब एक स्त्री रिस्पेक्ट और कृतज्ञता देती है पति को, तब पति ऑटोमैटिकली वो थोड़ा भी प्रेम दे ही देगा। अगर वो असुरा भी हो, फिर भी वो पत्नी को खुश रखेगा। यानी खाने के लिए, पीने के लिए सब कुछ देगा। वो मारेगा भी नहीं, डाँटना भी कम हो जाएगा अगर वो असुरा हो। अगर वो अच्छा मर्द हो, तो वो प्रेम से देखभाल करेगा। तो ये रिस्पेक्ट का हुआ, इंडिपेंडेंस का हुआ, और मेरे चाइल्डहुड में क्यों इतना स्ट्रेस था जॉब जॉब लाइफ में, ये कवर हुआ। सो इन टुडेज सेशन वी कवर्ड दैट इन माय चाइल्डहुड व्हाई आई यूज्ड टू फील ऑल द आंटीज आर स्ट्रेस्ड आउट हु गो फॉर वर्क, and so why I felt averse to job going life in my childhood as per my observation. And secondly,
in social science I had learned that there should be equality for a boy and a girl, and I had learned about independence, about financial economic independence. But my mother convinced me that shastras are telling that there should be we should be following amanina manadena kirtaniya sadaharihi, and we should give respect and not expect respect. We can expect criticism, but we should give respect and give gratitude. Then naturally the other side will melt down and they will become nicer than what they should be. And my mother told me about equality, that equality we should never expect, because in Vedas a woman is respected like Lakshmi, a man is respected like Vishnu, and there is no question of equality because Shastras gives a superior position to a woman, and a woman should not expect these things. Rather, she should think how she can give. And one more thing was about independence, that when we I used to think that being financially independent may be good, but my mother said no, financially independent can make you proud, and can you make you bound with the feeling that I want to do everything as per my wish. If my husband stops me, I will tell him I have money, I don't need your money, you get lost. So this kind of attitude will creep in. Rather, if you follow the shastras and don't go for work, then you will not have money in your hand, so you'll be always dependent on your husband as you are dependent on your parents. And thereby you will respect your husband like the way you respected your parents, and you'll be grateful like the way you were grateful with your husband, with your parents, and thereby you'll have a sweet bond. And thereby you will realize that if you're doing everything to please Krishna, and if you follow these scriptural rules to please Krishna, then you will also realize I don't need to be bound by the desire of I want respect, I don't want my husband to boss over me. All these things will not bind you and control you, that only if they give me respect I can be happy, otherwise I'm very unhappy, I should fight for my respect. No, you will not even go behind respect. Seeking respect will be very silly in comparison to, you will feel that independence means that I don't need their respect, I will give respect. And I uh, I want to live in a way that the other person will not feel hurt, the other person will not feel disrespected, and you will want to live in a way that Krishna, I want to live in a way to please you. That is Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari, and also means that line means that we should be more tolerant than a tree. A tree, even if it gives us everything, and even if it is cut, it does not complain. A grass, if you stamp on it, it will again stand. But a straw, if you stamp on it also, it will remain in the same place. So our humility should be that much. Then only we can chant Krishna's names non-stop. Then only at the time of death we can go back to God. So my mother had told me that don't, the independence, real independence means that we will be independent by following the shastras, that we'll be happy by ourselves because we are following the shastras. When we follow the shastras, we are pleasing the Supreme Lord and we are his part and parcel. So when we please him, we being his part and parcel, we will also automatically be pleased. And when we try to please Krishna, or when we try to please Krishna given husband by giving them respect, even if they scold us, if we think that okay, Krishna has allowed this, I should correct myself, and if we don't give back, then we are giving respect. What happens to us? Naturally, Krishna becomes pleased. When Krishna is pleased, he makes the husband happy, and then the husband reciprocates with us by becoming happy or by becoming calm or by stopping the scoldings, and thereby our bond remains sweet, the bond remains fresh. And the Krishna shows his love through the husband, or Krishna shows the love through anybody around when we follow the Shastras. Because Krishna can't come and say, oh, I really love you. You're doing everything, my dear. You're so sweet. Krishna can't say that to us because we are not pure devotees yet.
but Krishna will say that through everyone around. So we will be independent. We will not be dependent on others' respect, others' recognition. Rather, we will do everything for Krishna's recognition or for Krishna's pleasure, and we'll be independent from the desire to control others and the desire to seek respect. So, in this way, we covered the topic of independence, the um, topic of how job. I was averse to the idea of women working in my childhood, as per my observation, and I was also learning from my mother about equality and independence. Thank you very much, Hari Krishna.